There is news, there's sense, and there is nuisance. This show is all about that last bit. It's Manisha's time to recover from watching too much toxic news, so it's me, Abhinandan standing in, customary groans of disappointment and all that. Now today on Newsance, I want to address something which a certain political grouping has popularized. Go to Pakistan. We keep hearing it somewhere on social media, on news channels, or on WhatsApp groups. I'm sure you have as well. बांग्लादेश या पाकिस्तान जाए, यहाँ क्या काम? आने वाले दिन में ऐसे लोगों के लिए जगह हिंदुस्तान में नहीं, झारखंड में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में होगा। अगर उन देश पर भरोसा नहीं है तो जहाँ के वो हैं वहाँ चले जाएं। इसलिए हमने लिखा है कि पाकिस्तान के यार कितने गद्दारी तो है भाई। आप जैसे लोग सवाल ये है के पैसे दिए और खाते पाकिस्तान के 80 किलो आटे पाकिस्तान आया 80 किलो पाकिस्तान से आया पाकिस्तान अब इतना भी गेट टू हियर गो टू पाकिस्तान। भाई लेट्स सी पाकिस्तान में हो क्या रहा है, फुल इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। A local resident of Khaisur in Waziristan killed his brother and sister-in-law. The state remained absent. Afterwards, local Jargah and Uthmanzai took the law in their hands and demolished the man's house. Women and children were made homeless. State remained absent again. This is Pakistan. As per a tweet by Pakistani National Assembly member, a man murdered some people of his extended family, so the villagers got together and demolished his house. Matlab, no trial, no defense, nothing. Now his children and family are homeless. What a banana republic. ऐसा हमारे यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ भी काफी होता है। Are you sure? Really? But state doesn't stand by watch, right? हमारे यहाँ state will not just watch this happening. यहाँ तो स्टेट ही करती है। State ही करता है. But that's a good thing. It's a good thing, right? In Pakistan, this job is left to goons. Here, the state is the law. And the news media, which is a public interest service, cheers on when the poorest and most helpless are made homeless. That's the beauty. Because most primetime faces get a kick out of seeing others miserable, which is an affliction which I will talk about later. अब योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो कर दिखाया और अब योगी सरकार का बुलडोजर उन्हें रौंद रहा है जो हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाते रहे। ये पहली बार हो रहा है। मतलब माफियाओं के बाद अब लव जिहादियों पर भी बुलडोजर वाला हुआ, लेकिन बुलडोजर चलेगा। जिस तरह से यूपी में उपद्रव और हिंसा करने वालों पर बुलडोजर से एक्शन होता है, उसी तरह से नूह के उपद्रवियों पर भी बुलडोजर एक्शन हो गया है। योगी मॉडल से क्राइम कंट्रोल का तरीका हरियाणा में भी अपनाया जा रहा है। क्या दंगा तंत्र के खिलाफ बुलडोजर ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है? आपने कौन सा तोड़ा भैया? आप लोग जैसे ये जूस कॉर्नर है, इसको पूरा नहीं गिराया आपने, सिर्फ लिंटर गिराया, ऊपर वाला पार्ट गिराया, इसकी क्या वजह है? क्या अब सांप्रदायिक हिंसा का जवाब बुलडोजर है? पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर क्यों न चले? And if you don't like this, go to Pakistan. Our news anchors are so obsessed with Pakistan कि यहाँ कुछ भी होता है They are like, वो देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां तो it's worse. अब आपको आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की गरीबी की नई कहानी बताते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां की सरकार के पास बिजली का बिल भरने के भी पैसे नहीं है। आप भी पाकिस्तान से? अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तो और बुरा हाल हो रखा है। मैंने देखा, हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ तो आटा भी नहीं मिल रहा और आटे की बोरियां आ रही तो लुट जा रही हैं। तो वो सब आप लोग देखती हैं यहाँ बैठ के, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक छोटी सी सैर करा के लाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब एक किलो आटे के लिए गोलियां चल रही हैं। इंडिया में चीजें जो हैं वो सस्ती हैं, बेहतर हैं, तब और क्या महसूस होता है? इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे है तो वो देखो पाकिस्तान ज्यादा सड़या होया है। क्या आप वाकई मानते हैं कि आप बहुत कम खुश हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत दुखी हैं? इतने दुखी हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज्यादा खुश हैं? अगर हम इस रिपोर्ट को सही मान लें तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में आजकल आटे के लिए लोगों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष असल में संघर्ष नहीं है, बल्कि शायद एक सेलिब्रेशन है। आई एम कंफ्यूज यार। अगर यहाँ पाकिस्तानी बनाना है तो हमें पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? And if you guys love Pakistan so much and covering it and talking about it, I have a great suggestion for you. Just hear me out. I think you should go to Pakistan. Now talking of Pakistan, this week India played Pakistan in the Asia Cup. Yeah, I was aghast. How can we playing them like we are friends? दोस्तों में खेलते हैं ना sports तो. And they are not friends. The great statesman and leader, BJP MP from Delhi, Gautam Gambhir ji, जिनको प्यार से मैं जीजी बोलता हूँ,
had said this in a TV show. क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? What do you have to नहीं say होना। on this? देखिए, नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही बोला जी। He is BJP MP, patriot, nationalist. I hope BCCI and Amit Shah ka beta heeded his advice. No? So match happened? Shocking! But thankfully, BJP, who has MPs like GGG, who stand for principles, values, and by their word, must have protested the game. He must have sat on dharna. No? He was commentator? ईशान किशन ओपन करते शुभमन गिल के साथ। आप अगर रोहित शर्मा खुद 3 पे उतरना चाहते हैं तो रोहित शर्मा 3 पे उतर सकते थे, विराट कोहली 4 पे उतर सकते थे, या रोहित शर्मा 4 पे उतरते, विराट कोहली 3 पे उतरते। क्या यार जी, क्या आदमी हो? डोंट प्ले, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट इफ यू आर प्लेइंग, टिप्पणी देने में पहुंच जाऊंगा। कमाल है यार। एक महान व्यक्ति ने ये बहुत जरूरी बात बोली थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। But the best was yet to come. GGG demonstrated that not only does he not stick to his word, but he is also a dignified and eloquent leader who knows how to handle, difficult, bareek situations. Some background first. Background is that GGG clearly can't stand Virat Kohli. Indian cricket team ka dil aur India ka bhi dil. Now, after the match, as GGG was leaving, a bunch of cricket fans were yelling Kohli's name. So GGG did this. Uff, yaar, kya cheez ho tum. What a poor sport. People shouting Kohli's name got this reaction from a sitting member of parliament of India, not of Pakistan. If you can't support Indian cricketers during a match with Pakistan, you should Go to Pakistan. If you think the reaction was ridiculous, then just hear his explanation. It is mind-blowing. वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीज़ें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता हूँ। अच्छा, for such a घटिया, घिसा पिटा excuse, you should Go to Pakistan. We'll talk about this dubious claim which has been debunked a little later, but एक second के लिए मान लेते हैं कि they were chanting anti-India slogans like टुकड़े टुकड़े होंगे type. Your response to that was this? Tweet. Seriously? That's your response? Yaar, you could have done a variety of things. Learn from your own party members. यार, आपकी पार्टी का एमपी है, and if a hand pump is too much for you, स्टेडियम के बाथरूम की बाल्टी, मग्गा या वो बिडे होता है ना, बिडे, वही उखाड़ लेता। पंजाब में उसको कहते हैं बुंड चपुआरा. And if you go outside, the Punjabi, when he goes to Vilayat, he calls it bottom shower. कमजोर लोगों का हैंड पंप. चलो, if that was too much work for you, you could have done this. She is also from your party. She confronted anti-India slogans with pro-India slogans without fear. एक भिड़ गई. But no, your reaction was tui, 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 tui. I'm really curious. How do you participate in parliamentary debates? Like कोई footage है इनकी कोई debate में? Like when there is a parliamentary debate happening and you have to respond to something you dislike or you disagree with, what does the esteemed MP do? I'm really keen to know. And GGG, Sunny Paji has quite a dismal record in parliament just like yours. But at least outside parliament, his response is, 2.5 kilo ka hath, daddy. You know the dialogue, right? Chadda, ये 2.5 किलो का हाथ बढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. See, this doesn't work at 2.5 सेंटीमीटर की उंगली. See, we'll try it. चड्डा, ये 2.5 सेंटीमीटर की उंगली पड़ते ही ना हाथ. See, it doesn't work. It's a lame response. And you're not supporting cricket. I really think you should go to Pakistan. No, wait. Please come back from Pakistan. We have to deal with the dishonest excuse as well. Coming to the claim that the people were not shouting Kohli Kohli, but instead were shouting anti-India slogans, which no one believes. The most tucha ghatiya special effects were used in a video shared by Richa Rajput, the head of social media cell of BJP, of course, of Youth Uttar Pradesh.
Now, everyone from Alt News to even India Today has debunked the bogus claim and demonstrated that the audio of the anti-India sloganeering has been taken from widely circulated videos of an event organized at Jawaharlal Nehru University in February on the 9th in 2016. And in case this tucha type audio replacement was not bad enough, they wrote real video. Because you know, if someone is in doubt and say, "Arey, kya ghatiya sa special effect hai? This can't be true." नहीं नहीं देख, real video लिखा है तो ठीक ही होगा, और वो भी घटिया font में लिखा है. Now coming back to GGG, जिनकी hypocrisy की कोई सीमा ही नहीं है, he said this on ANI, क्योंकि ANI ना कुछ भी चला देता है. जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए, तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है. वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है. हाँ, very nice. So cricket stadium is not a place for doing politics, but your petty politics finds its way into the post-match commentary, trying to disguise itself very lamely as aggression in sport. पहले मुझे नहीं याद कि मेरे टाइम पे, आपके टाइम पे आपने कभी मैच में कभी किसी को ऐसे हाथ कंधे पे रखा हो, किसी ओपोनेंट के, या फिर किसी को पंच किया हो, या किसी से प्यार से बात की. प्यार से बात इज अ रॉन्ग वर्ड, प्यार से आपने बात करी है, लेकिन आपकी आंखों में वो अग्रेशन था. Firstly यार, it's not punching, it's called fist bump. यार GGG, कैसे boomer जैसी बातें करते हो आप? I'm older than you and even I know it's called a fist bump. You can't be friendly in a match? यार, have you seen the footage of cricketing greats like Sir Vivian Richards, Krishnamacharya Srikanth, Kapil Dev, David Boone? They interact with each other while competing ruthlessly, but it's a friendly interaction. Don't try and disguise your all-round sadaness and angry venom as sporting aggression. Kohli has plenty of sporting aggression which we have seen. And आप क्या प्यार, दोस्ती, मोहब्बत की बात कर रहे हो? आपका एक्सप्रेशन ऑन ग्राउंड भी सड़ा होता है, ऑफ ग्राउंड भी सड़ा होता है, स्टेडियम में भी सड़ा होता है, स्टूडियो में भी सड़ा होता है. You're basically saddoing all the time. And your problem is you want everyone to be as sada as you. And you're not the only one. This is an affliction which even many news anchors, many angry and hate-spewing politicians suffer from. And I will diagnose it at the end of this show. Stay with me, GGG. This ailment of always being sada hua cannot be cured by ordinary jadi booty, because it's the problem of sadi booty. I will get into that in the end. But in all of this, we should note that Amish Devgan को कोई seriously नहीं लेता. यार गुल्लू, वो तुम्हारे शो पे बोल के चले गए थे कि मैच नहीं होना चाहिए, और मैच होते ही पतली गली से निकल लिए और कमेंट्री देने लग गए. कोई कुछ भी पेल कर चले जाता है और तुम देखते रहते हो. You should hold him to account, and if you can't, then go to Pakistan. And talking of Amish, this week I saw a film which blew my mind. Even Gullu had a small comic relief type cameo role in it. The film I'm talking about is While We Watched. It's a documentary that is creating waves the world over. It is with Ravish Kumar, the journalist, as a protagonist, and it deals with the erosion of independent news in New India. The Newslaundry will be hosting a screening for our subscribers of this film. By the way, only for subscribers. So please subscribe if you want to attend this and other such events, and also get all our content which is behind the paywall. I'll wait. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button, put in your credit card details, you know the drill. Please do so. I will wait. You can pause it. Pay to keep news free. गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें. If you don't support news, journalism will die. So please step up. Take a moment and contribute to keeping democracy and public interest journalism alive. Now, coming back to While We Watched. It's a riveting watch. And I'd like to talk about one scene especially. Right after being presented an award at the Exchange for Media News Broadcasting Awards 2018, Ravish Kumar had this to say. आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है. आज टीवी का पर्दा जो है वो बहुत तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है. बिजनेस की चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन उस पर्दे पर हम इनाम के लिए भेजे गए अपनी अपनी बेहतरीन रिपोर्ट के टुकड़े के अलावा बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग भी जिसे आप अकेले में भी नहीं देख सकते हैं. Now, I felt this was very powerful. It was a great moment. The kind of news that is being run on channels today, it's true that people in future will look back and say, this was a dark time for TV journalism. But then, it was Gullu's turn to receive an award, and he said this. कुछ देर पहले काफी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं. जरूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें तो लगे हम
अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है। हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। यार व्हाट अ कार्टून यू आर गुल्लू। योर रिटॉर्ट टू रवीश वाज हमारी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है तो सब ठीक है। What a time we live in. In a more sensible age, people like Amish, Sushant Sinha, Aman Chopra would not be admitted in a newsroom to even make photocopies of a script. But in Amrit Kal, they have primetime shows for Nautanki. But Gullu ki baat that our viewership is so high, it's not just his baat. His channel has been taking out full page ads boasting about this. देखिए. आज तक, nowhere to be found. Aaj Tak is now yesterday's news. No matter how they play with numbers, News 18 India remains way ahead of Aaj Tak. CNN News 18 crushes Times Now. CNBC TV 18, we have no one for company with 95% market share. Network 18 versus who? Now News 18 ने ये तो बता दिया that they are number 1 in viewership. But what they did not tell you is, on those front page ads, how they got those viewership numbers. कोई बात नहीं, हम हैं ना, वो काम हम कर देते हैं. Now have a look. रक्षाबंधन पर पाकिस्तानी भाई को याद कर रोई सीमा. भाई को बुला दो या मुझे पाकिस्तान भेज दो. राखी बंधवाने सीमा पार से आया भाई. सुरक्षा एजेंसी हैरान. ये क्या दिखा चंद्रयान के कैमरे से? एलियंस रहते हैं यहाँ. घूमते घूमते चांद पर रोवर प्रज्ञान को दिखा एलियन. चांद पर एलियन को देखकर हवा में उड़ गया लैंडर. वाह वाह वाह, क्या हाई क्वालिटी सीरियस जर्नलिज्म का नमूना पेश किया है. ये लोग नंबर 1 इस पर बनते हैं. And in this age of shamelessness, where GGG can make claims which are fabricated and easily debunked, Gullu can retort to journalists whose work alone is worth more than Gullu's entire channel put together. The slogan for dissent will obviously be Go to Pakistan. Now see this video जिसका thumbnail says Pragyan rover को दिखा alien. It has nothing about aliens because obviously there are no aliens up there. It has 4.5 million views because serious news is all about obviously fictitious aliens. And it's not like this Nautanki is honest. Thumbnail पे alien लेकिन video में there is no alien. उल्लू बन गया viewer, which is fine. Life में उल्लू बन जाना, लेकिन गुल्लू कभी मत बनना. Now this video which says alien को देख के फुटक गया लैंडर और उड़ गया लैंडर, whatever it says, it's all about the hop experiment done by ISRO. ऐसे बनते हैं number 1 बेटा, समझ गए? Now coming back to the empty boasts of Network 18. Their messaging is full of how they have demolished other networks, including Times Now. Their ad says, yaar, CNN News 18 crushes Times Now. Crush kar diya beta, crush. Arey then why have you got this crushed networks, crushed superstar, Karare Chane expert Rahul Shivshankar on board? Big news coming in, big news coming in. It's time for me to say hello and welcome to Rahul Shivshankar here in our studios. Welcome aboard the News 18 network and this family, Rahul. Lovely to see you, Anand. Lovely to see you, and thank you very much for having me on board. It's been a time of reflection over the last 2 months, and I'm also very thankful to a large number of viewers who have been asking when I'm going to be on air, and I can tell you that it will be very soon on this platform in some shape or form. समझ नहीं आया यार. We crushed that network's show and now we will hire their primetime anchor. But I'm happy. मुझे कोई गिला शिकवा नहीं. कोई और देखे ना देखे, I will watch RSS because I need my करारे चने fix, करारे ले. Your most loyal viewer and those who dislike you. Go to Pakistan, bro. And RSS, no matter how many cases you file against me, I will never want to crush you or your channel. Only crush on you. My towering news personality. Look forward to having you back. We need the material. But one person who always provides material and never disappoints is Sudhir Chaudhary. Last week, he won big at the ENBA, following which he was interviewed by Anurag Batra, the chairman and editor-in-chief of Business World and Exchange for Media Group. Now, watching that interview, the first thing that came to my mind was that we have lost our sense of humor in public life. It is the sadi booty affliction that I told you about, which cannot be cured by any jadi booty. It is seeping into all of us. I'll tell you about it a little later, but for now, listen to this. सुधीर जी ने अपना पत्रकारिता का जो सफर है कहाँ से शुरू किया? किसी को मालूम है? कौन से क्षेत्र से शुरू किया? कौन सी कंपनी से शुरू किया?
Now the reason why I say people have lost their sense of humor is that nobody got up and said कि शुरू का तो पता नहीं कहां से हुआ था आपका करियर, लेकिन तिहाड़ से होके जरूर गुजरा. But no one said that. Perfect setup line, no one delivered a punchline, and it was an audience full of people. मुझ में एक फर्क था, और मैं आज जो जैसा आप कह रहे हैं, इस पूरे दौरान पत्रकारों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, और बाहर अगर निकलते भी हैं तो लोगों से बात करना बंद कर दिया. बाकी पत्रकारों ने बाहर निकलना बंद कर दिया तो मैं सीधा अंदर हो लिया तिहाड़ के. ऑब्वियसली स्कूल में जो पेरेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं. कॉलेज में गए तो कॉलेज के लड़के लड़कियां क्या बात कर रहे हैं. लेकिन पेरेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप इज सो बोरिंग. मैंने सोचा मुझे पता है पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल्स क्या बात कर रहे हैं ये देखते हैं. तो मैं सीधा तिहाड़ में हो लिया. इट वॉज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. It was not for freedom of speech, it was not any principal stands, it was purely for investigative journalism. Commentator Tebos, Shava meri jaan. But Sudhir totally stole my heart with this one talking point which I genuinely agree with. Such honesty, such wisdom you will never find on his show, for sure. When he said this, it was like, bhai, you and I, same. मैं ये कब से बोल रहा हूँ? No, seriously. Listen to what he's saying. सीमा हैदर लगातार खबरों में है, प्राइम टाइम में है. क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि उसमें रेटिंग है. रेटिंग है तो विज्ञापन है, विज्ञापन है तो पैसा है. अब आप सोचिए इसमें व्यूअर कहाँ है हमारा. Now we've been saying this forever. You know that. Ads and clicks की लालच में न्यूज की आहुति हो गई है. It's finished. Which is why we always say, don't make news for ads. Make news for people, and therefore people must support journalism, or journalism will die. अब सुधीर ने भी बोल दिया यार. So please support us because we don't take any ads exactly for the reason that Sudhir mentioned. We depend on you, Newslaundry's reporters. They get you ground reports, our producers, our engineers, everyone. You pay for them, you pay for news, not some advertiser based on clicks that have been extracted by dishonest alien Chudail type news reports. A word from our sponsor, and I'll just be back telling you more about the सड़ी बूटी डिजीज. आज की बड़ी खबर, बीड़ी पीने की शौकीन है सीमा. टमाटर ने फिर दिखाई आंखें लाल. कीमत 200 के पार. पाकिस्तान में टमाटर के क्या हालत है. लव जिहाद, सब्जी जिहाद और अब पबजी जिहाद. और जानते हैं ये सब करने के लिए इन्हें क्या मिलते हैं? ढेर सारे पैसे. फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 30 जनवरी 2023 तक भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 2770 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है. ये आंकड़ा तो सिर्फ केंद्र सरकार का है. राज्य सरकारें भी भर के विज्ञापन देती है. जानती हैं पैसे किसके हैं? आप सबके. आपके पैसे से आपको क्या मिलता है? यही उछल कूद. न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही किसी सरकार से. हम आपके सहयोग से काम करते हैं. आपके सहयोग से हम आपको देते हैं इन डेप्थ ग्राउंड रिपोर्ट्स, अनकट इंटरव्यूज, वीडियो रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट और बहुत कुछ. तो देर किस बात की है? न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें. हमें सहयोग देने के लिए newslaundry.com पर जाएं और अपने मन मुताबिक प्लान चुनें. आप जानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया का आजाद होना बेहद जरूरी है. ना इतना गो टू पाकिस्तान हो गया है. अब तो वैसे ही पाकिस्तान भी इंडिया बनने वाला है. इस हफ्ते एक नया मास्टर स्ट्रोक निकला. किसने किया, किसका आइडिया था, नो वन नोज. इंडिया को भारत बनाने का. Yes, RSS chief Mohan Bhagwat on September 3rd had asked people to use Bharat more. लेकिन G20 के इनविटेशन कार्ड्स और अधिकारियों के ID बैजेस पर इंडिया की जगह भारत लिखना is it a big deal? Is it not a big deal? I don't know. But clearly this is a defensive response to the coalition of opposition parties that have called themselves India. So it is an attempt to kill that branding and delegitimize India as a word or a phrase. And right on cue, BJP MP हरनाथ सिंह यादव said this. भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है. और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजियों में, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग. और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है. And predictably,
all TV channels started doing their duty and ran primetime shows on this non-issue. एक देश एक नाम, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। बहस पूरे देश में इस बात को लेकर हो रही है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान भारत से है या हमारी पहचान इंडिया से है? इंडिया से या इंडियन बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारतीय बोलने में क्या दिक्कत? इंडिया क्यों भड़का हुआ, यानी कि इंडिया अलायंस। Ladies and gentlemen, we say only Bharat. Boss, primetime news has become BJP सरकार का test balloon. They rake up something and if it doesn't work, the government need not get its hands dirty and say हमने तो कब बोला. No one has called a masterstroke or given credit to Modi ji yet. So let me be the one. This is a masterstroke by Modi ji. Here is how. Now, if we were to officially reject India as the name of our nation and replace it with Bharat, according to some not so reliable Twitter sources, which is better than what most legacy media uses as evidence, Pakistan now might want to take up the name India. So if they take the name India and adopt it, then we can quickly refer to our original constitution, Gullu, and then say India, that is Bharat, matlab, same. So Pakistan is also Bharat. बना दिया मोदी जी ने अखंड भारत, हो गया A+B होल स्क्वायर, मतलब एक एक्स्ट्रा 2 भी मिला कि नहीं मिला? मास्टर स्ट्रोक। जिसे सुनकर कानों में खनक आने लगे, भारत, ये वो नाम है जो लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दे। भारत, ये वो नाम है जिसे सुनकर आप अपने जमीन से जुड़ने लगे। कभी किसी ने नहीं पूछा भाई कि जब एक देश एक टैक्स हो सकता है, जब एक देश एक संविधान हो सकता है, एक देश एक विधान की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो देश एक नाम अनेक क्यों? The word India is a foreign name. Reclaiming of Bharat's identity is a massive shift from the era of being queasy about our identity, underplaying who we are. दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं, संघ ने कह दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब दिक्कत। क्योंकि जो मोदी कह दें उसका तो विरोध करना है। कल वो मोदी कह देंगे कि सांस लेना अच्छी चीज है, तो ये लोग सांस लेने का भी विरोध कर देंगे। ये सब नाक रोक के, सांस रोक के बैठ जाओ भाई। Now, as promised, I will close this show with the diagnosis of the problem that GGG, so many news anchors, so many sadawa, venom-sprouting politicians have. Always sadowing, angry, bitter, hate, ladai, jhagda. Which is why they need the diagnosis of Dr. Sadi Booty. Cause no ordinary Jadi Booty can cure the problem of Sadi Booty. I'm sure you must have met people who can't stand anyone having good time or being happy. They get their kicks by making others miserable. Even if their lives don't improve at all. Twitter's full of them. Jali na teri, Barnaul. You know what I'm talking about. There are many like this. मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन तेरी जली. बस ठंड पै गई. This is the Sadi Booty affliction. Such people are okay remaining miserable as long as they feel that they have made life miserable for someone else. अगर मैं खुश नहीं, फिर no one should be happy. And if I'm rotten, let's make the whole world a more rotten place. The kind of people who would go around beating up couples on Valentine's Day, pure frustration. खुद तो chance नहीं है. You can't find love because you are so rotten. Next best thing, no one should. Now, when I was young in college, there were these typical fellows who I'm sure you guys also encountered, who had no friends, girls or guys. They had no game. They had no scope, no prospects. They also danced badly. Now, since they were miserable, they would inevitably cause a fight or a ruckus at every college festival, at a rock concert, at a party, at a debating contest. I am Sadawa, let me make the whole festival Sadawa. They need to be diagnosed with the Sadi Booty affliction that cannot be cured by any ordinary Jadi Booty. You give such people power, money, privilege, everything. Give them the country to run on a platter, they will still be Sadawa. Cause the sadaness and rot is inside, says Dr. Sadi Booty. Give them primetime shows to host and they will still remain Sada. Give them top viewership, they will still remain Sada. And they will use that to spread the Sada poison. And these days we've given such people the country to run. Ki bhai, I'm miserable, so everyone should be. Now let me do what I can to spread the sadaness. That's the motto. I offer my services of Dr. Sadi Booty. If you feel you are a rotten person and can't help but spread that rot and venom all across the world and that poison and anger to your viewers, and nothing makes you laugh, call me Dr. Sadi Booty. It's the only booty call that is in your kismat. Now that's all the nuisance we have for you. Stay mad. That's the only way. Go to Pakistan.